guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing fine, safe, secure at your place. So in today's video I'm gonna share this makeup look. It's a very simple thing that I usually do, but I just did my smoky eye by using my kajal. I just applied kajal and just smudged it. It's a very easy thing. I did it in my past video as well. So without any delay, let's get into the video. Toner, I'm using this rose hip toner. For serum, I'm using this Lakme 9 to 5 vitamin C serum. For moisturizing, I'm using this moisturizer, Lakme Soft Cream 24 Hour Moisture Lock. गाइस मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ बिकॉज यू नो इट्स बैक टू बैक दैट आई एम डूइंग मेकअप। आई फील कि मेरी स्किन काफ़ी ड्राई सी फील हो रही है और मेकअप से पहले ये लेयर्स लगाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सो दैट मेकअप का यू नो जो भी हार्म हो, जो उसमें केमिकल्स है वो आपके स्किन पे पेनिट्रेट ना हो जाए, क्योंकि ऑब्वियसली मेकअप का भी बहुत लेयर लगता है। तो मेकअप की लेयर से पहले अगर हम अपनी क्रीम की मॉइस्चराइजिंग की लेयर कर ले, एक तो मेकअप बहुत अच्छा दिखता है, फ्लॉलेस दिखता है, और सेकंड पॉइंट इज़ कि आपकी स्किन डैमेज होने से बच जाती है। जो कि मुझे मेरी स्किन बहुत डैमेज, बहुत टैन लग रही है, काफ़ी ब्राउन लग रही हूँ ना, मैं इतनी ब्राउन हूँ नहीं, बट मे बी ड्यू टू स्केड्यूल और आई वेंट टू माई होम टाउन थोड़ा फ़र्क पड़ता है। सो मैंने बहुत अच्छे से यहाँ पे क्रीम लगा लिया। फॉर बेस आई एम यूजिंग माई फाउंडेशन फिटमी मेबलिन फिटमी फाउंडेशन। तो बहुत थोड़ा लगाऊंगी बिकॉज इट्स काइंड ऑफ फैमिली फंक्शन, ज़्यादा पोत पात के नहीं जाना है, सिर्फ इतना ले रही हूँ मैं और इसी को मैं अपने पूरे फेस पे लगाऊंगी। For concealer, I'm using this Maybelline Instant Age Rewind Eraser Multi-Use Concealer और मैं यहाँ पे भी लगाऊंगी, और क्योंकि थोड़ा डिस्कलरेशन हो रहा है मुझे। I will set my base by using the Maybelline Compact. So guys, I'm gonna create the smoky eye for myself because my dress is all in black. So I'll use this kajal and I'll smudge it in a very simple way. अब मैं ब्लैक काजल नीचे भी लगा लूँगी बिकॉज मुझे पूरा ऑल ब्लैक ऑल स्मोकी चाहिए, दैट इज़ वाई। गाइस मैंने थोड़ा स्मच कर लिया है, आप ये देख लो, मैंने इसको बहुत अच्छे से स्मच किया है। अब मैं इसको भी अच्छे से स्मच कर रही हूँ। I'll fill my brows by using this Swiss Beauty Brow Pencil. Now I'll apply mascara by Maybelline. So for blush, I'll use the same lipstick for blush. So I'm done with my blush. Next I have this lipstick in my hand. तो मैं इसको हल्का से डैप डैप करके लगा लूँगी बिकॉज मुझे टिंट लुक चाहिए, मुझे लिपस्टिक लुक नहीं चाहिए। So by this I end this video here because I'm done with my makeup. I might change my earring or not, I'll see because I like it in that way. I think I will not change. लेट्स सी क्या होता है मूड पे।
एंड आई एम डन विथ माई मेकअप। ये थोड़ा सा स्मोकी आई है, तो आप चाहो आप अपने अकॉर्डिंग अपना कलर यूज़ करके, ब्लू ब्राउन, आप वो भी यूज़ करके आप स्मोकी आई क्रिएट कर सकते हो। एंड आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी, और अगर अच्छी लगी हो तो मेक श्योर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल।